Can you see my screen, everyone? All right. So we'll be starting with actual, coding HTML and CSS today, right? So I think the one of the most important sites for learning, I would recommend is W3 Schools. So we'll be following this curriculum itself, right? So whatever they have mentioned here, right? So I want everyone to open this website and try for yourself. Anshul, yesterday's recorded lecture, link will be shared by Samir, sir. You can tag him in the, WhatsApp group, or I'll ask him to share the link with you guys. All right. Anyways, yeah. So we'll start, right? So yesterday we also saw the, boiler template of how the HTML works, right? So let's go and let's try this for ourselves, right? Now we'll see the doc type is written HTML. There is it's not necessary to define it, but then it's one of the tags that you can use, right? Now we have a HTML tag, so everything will be wrapped inside the HTML tag. When you're going to make any website using HTML, you will wrap everything inside the HTML tag, right? So you need an opening tag and you need a closing tag, right? Whenever you write a closing tag, it will start with /, right, everyone? Now we'll move forward with the next one. The next one is the head tag, right? So head tag is what? So you write your headers. Basically, you define your headers inside this, right? So you can define your meta tag inside that, right? You can define your title tag inside that, right? And also you can define your CSS inside the head tag, right? So what kind of CSS is defined inside the head tag? Anyone? Sorry. Everyone is here, right? Yeah. All right. So the CSS that we define inside the head tag is called the internal CSS. And when we write, write inside HTML here, right, style or something like that, we define the inline CSS. So basically CSS are of three types. There can be an external CSS file, there can be an internal CSS, and there can be an inline CSS, right? So we'll look through that as well, right? For now, let's focus on the HTML. Now, you see page title, right? That can be viewed on the top of your website, right? Now, let's go down here. You see H1, this is a heading, right? So you can see the heading tag. Now let's just copy paste this one, right? And we'll change the H1 to H2. We'll save H1 here, S3. We'll have here H4. Let me write this and then we'll see the difference. Let's run this. So you all can see the difference between the sizes, right? So as the numbers in the heading tag increases, so 1 to 6 जैसे हम जाएंगे, the size decreases, right? So this is how you can basically give a heading to your blocks, let's say, or your website, something like, right? Now there's a paragraph tag. So in the paragraph tag, when you want to write a paragraph, as simple as that, you can write it here, right? So let's say this is a Cook Boru class, right? If I run this, the things will be loaded here, right, everyone? This much is clear, I guess. All right, we'll move forward. Let's go for HTML basics. What are there? So we have already went through H1 tag, right? We have went through the P tag. Now let's see what is a doc type again here written, right? So a doc type is a declaration of what kind of document type you're going to use, right? So it helps browser display web pages correctly. So
you define it at the very start, right? So yeah, you're writing exclamation mark and the doc type, and then you write the name of the doc type, right? That's HTML. Now let's move forward. Now, let's look at the links, right? So why do we need a link? It could be used to attach, different pages within the website, right? So you can have a home page, you can have a about page, you can have a blog page, login page, right? So you can link that. You can link external links. Sometimes you can also link, a button to another section of the same page, right? You define that through IDs. That also we'll be seeing, after some time, right? You can see here that we have used in S2 tag, right? HTML links. So it is appearing here, right? Now in the href, so you define the link in the inside the href, right? Uh, then you have to paste the link here. So you see this is w3schools.com. Now if I change this, let's say to lpu.in, now run this, and then I click on this. It'll open the LPU's website. See, right? Now, if I go and I write the hypertext, I can change from here, right? LPU website. Run. See, you can change the text within the ahref tag, right? Now we'll go forward. Now there's this image tag. So obviously, as the name states, it is used for displaying an image. Let's try it for ourselves. See, so when we go to the src, we have to give the source, basically where the image is stored, right? In your local files, it can be described something like, let's say D, right? Then you go to the, let's say, documents. So you define the file folder structure, right? Then you go to the images, something like that. But when you have uploaded a website on the internet, you will have a link to the image, right? You will always get a link, right? It can be through CDNs. That is your, CDNs is there. I'll explain what is the CDN later on, right? So or it can be stored anywhere in the database or something like that, right? You can also store it on your drive, right? And then you can paste the link here and it will be loaded here, right? Now there's the alt text. So basically, let's say, when your image is not loading, right? Internet bot slower. In that case, that alt text will be visible to the user, right? So what kind of image we are trying to show. Then you can define the width and height, right? So let's say I can increase it to, let's say, 208, and let's say I double it and I go 284. Now let's run this, and you can see the size increases, right? I hope this much is clear to everyone. Does anyone know what is a So I talked about CDN. Does anyone already know what is a CDN? Okay, so if anyone doesn't know, basically CDN stands for Content Delivery Network. So as the name suggests, so your content or your data is distributed all over the internet, right? अभी जहाँ पे भी आपका nearest CDN store होगा, वहाँ से we will fetching the data so that it can load faster. Let's say if your server is in India, right, and you put an image there, or let's say file there, but someone is accessing your files on, let's say, in the US. तो load time बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, and it's not good for your website, right? So we deploy that over CDNs. So basically, you know they are distributed all over the world, and then your users, basically your end clients, can access it faster, right, everyone? Let's go to the next thing that is being shown here. Let's see what elements are there. Yeah, so we went through h1 tag, we went through the p tag. Now what is a br tag? So br tag is like you give a, like you give your line a break, right? Abhi next line pe aa jayega uske baad se cheeze, right? So br tag, when we enter, ye iska koi like
You don't have to write a closing tag for that. Just write BR and it works like that, right? Let's say, see अगर कोई example है, we can use that. All right, let's go here. Abhi I'll copy this p tag twice, right? Let's say, and let's run this. Okay. Yes, here it's saying like that. Okay, no worries. अभी मैं काम करता हूँ, मैं p tag के अंदर और भी बहुत सारी चीजें लिखता हूँ. It's this my first paragraph, my second paragraph, right? Let's say my third paragraph, right? Now if I run this, सबके सब एक लाइन पे आ जाएंगे. But let's say if I write BR here, and let's run this, you see, it goes to the new line, right? Without changing the paragraph in like in all total, right? अभी मैं अभी दोबारा से जाकर के करूं अगर तो I'll put BR here. Now the third paragraph go to the third line. So I think the BR tag is clear to everyone. कोई भी डाउट होता है please message. Let's close this. All right, let's see what all things are there. Okay, nothing here to discuss much more. Now, what are attributes, right? So attributes are used to provide additional information, right? हम कुछ additional information देते हैं. So an HTML element can have, attributes. Attributes provide additional information about elements. Attributes are always specified in the start tag, right? So हमारे पास एक start tag होता है and end tag होता है, right? So this is the start tag, right? And this is the end tag, the closing tag. So whenever we are going to write the attributes, हम हमेशा start tag में लिखेंगे, not in the end tag, right? Now, how do you write the attribute? Like kind of a key value pair, like you write a name, let's say href, that's the key, then you give the value to it, right? Now, there's an src again, source हम बताते हैं. In the image tag, we use the src attribute, right? So where is the source of my image, right? Now let's go down. Then we have already seen what is the width and height. So हम कभी when we are going to define an image, हम उसका width and height define कर रहे होते हैं, right? Now let's see what all things are there. Now we talk about the style element, right? So अभी क्या है कि we were using plain, p tag, right? H1 tag. Now the style element is used to give style to your, whatever you content you're going to throw to your website, right? तो आप style दे सकते हो अपने paragraphs को, अपने headings को, अपने images को, anything. You can give style to your, let's say, divisions as well. आप जब divisions create करोगे, what are the divisions? Like you can see chatting application में there is one division here, let's say there is another division here, right? There's a third division जहाँ पे this chat is being used, right? Even if I scroll up and down, you see these two are fixed, so they are in absolute position, ठीक है? But ये क्या है? ये floating position पे है, right? Again, these are the tiles जहाँ पे आपके नाम display हो रहे हैं, right? Everything. Even if you go here, you can see there are multiple, divisions. So first division is this. Is division ka style kya? It has white color background, right? This division, the background division, it has a gray color background, right? So आप ऐसे करके define कर सकते हो अपने style को. Now it is red. We can change it to blue, right? We can also use hex codes, right? Hex code क्या होते हैं? So they are like numbers. So you can use hash and then the value associated to it. वो भी हम देखेंगे one by one. So this is a red paragraph में blue आ रहा है. So let's change this to blue, right? So I think it is very clear, right? चलो, let's move forward. Yeah, so we can assign titles as well. Although we'll be using, जो हमारे लिए ज़्यादा important है. Let's go through that. Let's go to the heading. Heading हमने देखा हुआ है. We saw all these headings, right? H1, H2, H3, H4, and H6, right? Let's go to other things. ठीक है. Another style element attribute that you give is the font size. So you can assign a font size. ठीक है. अभी जैसे H1 tag का खुद का एक size है already, right? So अभी मैं इसको अगर हटाता हूँ, ठीक है. If I just remove this, so by default you get a size to your H1 tag, right? But आप उसको कभी भी change कर सकते हो using the style tag, right? So let's say it was 60px, right? We can go and we can, make that even 100px. So what is px? Can anyone tell me before I explain? Let's be interactive. What is a px?
Your laptops have, resolutions 180p, 1440p, 2160p. Do you know what is a PX? Yes, right. Pixel, right? तो पिक्सल क्या होते हैं? दे आर ग्रिड पैटर्न्स, राइट? वो हमें साइज बताते हैं अबाउट एनीथिंग, राइट? सो हम इमेज का साइज डिफाइन कर सकते हैं, हम टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट. सो जैसे मैंने 100px डाला, as the you increase it, size increases. Okay, let's close this, let's move on. देखते हैं क्या चीजें हमारे पास बची हुई हैं. सो पैराग्राफ्स हमने देख लिया है. लेट्स गो फॉर द स्टाइल्स कि हमारे पास स्टाइल्स में क्या क्या है. सो यू ऑलरेडी सॉ द कलर्स चेंजिंग, राइट? वी सॉ द साइज चेंजिंग, हाउ द वी चेंज द साइज, तो हमें वो नहीं देखना. लेट्स गो एंड चेक द बैकग्राउंड कलर, हाउ द बैकग्राउंड कलर इज बीइंग चेंज. अगेन, स्टाइल में you write that background color, and then you write the value associated to it. So you give the key value pair, right? This is fixed, so you have to use it like this, and then you can write the value. So जैसे भी यहाँ पे this powder blue, right? If I go and give it red, so let's run this. So your background becomes red, right? You go and give it green, right? Your background will become green. ठीक है? Now, अभी हम we are looking this CSS for the whole body. अभी body के अंदर style लिखा हुआ है. So and you are giving CSS to it actually. Style is what? We are giving some CSS. So CSS is again what? This is the inline CSS, right? हम body में क्या दे रहे हैं अभी? Inline CSS दे रहे हैं. So whenever we define CSS inside a tag, ठीक है? उस time पे that is called a inline CSS. Right? Everyone is clear with what is inside inline CSS? चलो, अभी इसी CSS पे बेस्ड है. जैसे अभी यहाँ पे CSS यू सी, अब बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है आपको. बैकग्राउंड कलर, देन यू राइट ग्रीन. उसी तरह से बहुत बड़े बड़े CSS डिफाइन होते हैं. सो हम थोड़ी देर बाद, लेट्स से नेक्स्ट वीक वी विल बी लर्निंग अबाउट टेलविंड CSS. ठीक है? सो मैं चाहता हूँ कि इवन बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट वीक, यू गो थ्रू दिस. इनके डॉक्स को आप गो थ्रू करो. ठीक है? आप चेक करो खुद से, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, so that you're prepared when we are going to learn it actually. Anyone used Tailwind CSS before? Right, Amit. What is Tailwind CSS, Amit? Can you define it for us? Is it easier to use Tailwind CSS या फिर हम अपना जो traditional CSS है वो use करें? What do you think is better? And why, if you think, yeah, easy to use. Tailwind CSS is easy to use. वहाँ पे हमारे जो attributes होते हैं वो बहुत छोटे. Right? Let's go to the docs. Let's say, ठीक है? We let these are the docs for installing. ठीक है? आपके पास npm installed होना चाहिए, right? Let's go and focus on something. देखो, आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हो वहां पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टाइल यू डिफाइन क्लास और क्लास नेम समटाइम्स, राइट? सो यू आल्सो यूज क्लास नेम, एंड देन उसके अंदर फिर आप उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हो. या यू डोंट नीड टू राइट द होल नेम, राइट? अगर आपको मार्जिन चाहिए लेट्स से 16px का, यू जस्ट राइट m4, राइट? So वहां पे 4 translates one, each number translate to 4px. So if I want 16px, I'll write 4 because 4 4s are 16, right? Similarly, if I need, let's if I give 8, then multiplied by 4, it will be around 32px. So ऐसे करके चलते रहता है, 4 के मल्टीपल्स में चलता है वहां पे. चलो, ठीक है. So please go through this, right? Tailwind CSS we'll be using from next week onwards. All right. Let us close this. Let's see if something is left here that I can show you. Okay, let's go with the fonts, right? हम fonts पे जाते हैं. ठीक है. So you can not only change your font का size, you can also change your font का family. Like this Verdana, right? This Courier. ठीक है, बहुत सारे fonts use करते हो आप यहाँ पे, वो change कर सकते हो, right? So very simple as that.
बेसिकली एट्रीब्यूट्स के आपके नाम याद रखने पड़ते हैं, सो यू नो सम यू विल हैव टू मेमोराइज, ठीक है, बट वो आपको यूज करते करते आ जाएगा, राइट। यू कैन गिव द अलाइनमेंट। सो बेसिकली क्या था पहले यहाँ पे, इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में स्टार्ट होता है, बट वी चेंज द अलाइनमेंट टू सेंटर, राइट। इफ आई चेंज द अलाइनमेंट टू राइट, व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, it will shift to right, right everyone? I think the alignment is clear to you all. So it's very easy. तो आपको मैं बोलूँगा please, you know, when after this class visit, you know, W3 schools, go through all those things, क्योंकि again this is, ये class का timing limited है, everything is limited, right? We cannot go through each and everything, ठीक है, हम basics clear करेंगे, but you will have to practice after the class. चलो let's see क्या बच गया इधर को. Okay, we have done things here. Let's go for formatting. Let's see what are the there, right? So again, we can give bold, we can give italics, we can write subscript, we can write, you know, superscript. कहाँ पे काम आता है subscript, superscript? Maths में अगर आपको कुछ use करना है, you want to write, you know, chemical formulas, ठीक है, तो वहाँ पे आप can use this. You see, this is a subscript. So let's say instead of subscript, I'll write, let's say 2, right? Let's go 2 and write H here, right? Let's write S. Let's write, sorry, I'll have to write O here. Let's run this. Oh, sorry, not in the superscript again. So you can write it in the subscript here. Okay. So you can see we can write the formula here. ठीक है. इसी तरह से if I want to give, you know, मेरे को कोई क्वेश्चन पेपर सेट करना है, x square minus y square is equal to let's say 4, तो उस केस में we'll be using superscript. ठीक है. So you can define it inside I, ठीक है, I tag होता है, but also you can define it using style. ठीक है, स्टाइल में आप लिख सकते हो बोल्ड एंड इटैलिक्स, राइट. सो उस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो. So again, there is strong अभी थोड़ा depreciate हो गया. You won't be seeing, you know, usually in the newer versions, right? Now let's go for और भी चीजें देखते हैं कुछ और अगर यहाँ पे है तो. Let's again see the examples. Let's say, ठीक है. So you can see अगर आप, you know, you can give a strike through using a del, you know, tag. So यहाँ पे आपका strike through आ जाता है, right? So whatever was published earlier, then whatever the new one is, you can give it inside the INS one, right? Chalo. Let's move on from this. I think it's not much important. ठीक है, हम colors पे जाते हैं. ठीक है, अभी हमने colors देखा है. Let's try to run something. ठीक है, let's go here. चलो. Earlier we saw that, you know, कि हमने जब body को background color दिया था, वो पूरे के पूरे background को उस color पे डाल दिया था. But now when we are giving H1 the color, it will only take up the space जहाँ पे H1 is defined, right? So जहाँ पे जैसे you can see hello world है. If I give, let's say, BR tag here, and let's say we write Gokboru. Let's try to run this. ठीक है, you see Gokboru नई line पे आ गया and the background color also stretched, right? नीचे की तरफ आ गया वो. Similarly, if you increase the P tag का यहाँ पे जितना paragraph है, it will increase with the you know, size of the paragraph. Let's go and give some background color to, let's say, a body. Okay, let's copy this from here. Let's go to body. Let's paste this. Okay. Let's give it a yellow color. Let's run this. You can see जब हम बॉडी पे देते हैं तो कंप्लीट उसका जो बॉडी है उसको वो इस बैकग्राउंड कलर से डाल देता है. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू ऑल गाइस. Again, I had discussed head, but मैंने body नहीं discuss किया था. So whatever the body of the website जो कि आपके website में visible होता है, right, on the front end, वो आप यहाँ पे body tag के अंदर use करोगे. यहाँ पे से हमने यहाँ पे कोई भी head tag use नहीं किया हुआ है अभी. चलो,
Let's close this. Let's move forward. हमने text color already देखा हुआ है, ठीक है? That we define inside the color. जब हमें background डालना होगा तो we'll write background color, right? Let's go. Let's see borders, right? Okay. Now border में first thing is 2px. ये 2px क्या है? This is the border का जो हमें ये देना है, right? Size देना है, right? So not size actually, like कितना मोटा border होगा, right? Sorry. So if I increase it to 10px, let's say, the thickness of the border will increase, right? If I equip it to 1px, it will become more thin. ठीक है? Now solid is what? Solid क्या है कि straight solid border, right? आपको there are multiple other types of style that you can give. It can be a dashed border. ठीक है? इस तरह से आप बहुत सारे दे सकते हो. Then you give the color to it. ठीक है? जैसे यहाँ पे tomato है, we give it yellow, so it will be getting a yellow, right? If I give it let's say 5px, it will go for 5, right? Thickness increase हो जाएगी. So I think this much should be clear to you all, guys. Let's see what all things are there. Now the color values I said. जैसे अभी तक हम क्या define कर रहे थे? It was tomato, it was red, it was yellow, but we can also define colors with RGB values and through hex codes. ठीक है? So let us see an example for that. See, यहाँ पे हमने RGB value define किया हुआ है. So you write background color and then the RGB value, and this RGB value is giving this color. आप कुछ भी change करोगे, the color will change, right? So let me go here. If I go and let's say 0, 0, 0, 0, 0, 0, and I run this, you see, becomes completely black, right? अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ and I write, let's say FFF, FFF, and I run this, it will become white. So the background became white completely. All right. So आपको just clear what is RGB, what is hex code, and there is also an HSLA code, right? So उससे भी आप define कर सकते हो your background. In this you can define कि कितना opacity है, right? All these things can be defined inside that. So are you clear with this, guys? Please confirm once in the chat. All right, thank you, guys. Chalo, let's close this and let's move on to let's see, let's go to the HSL code. Okay, so you give the hue, saturation, what is the lightness. ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हो. ठीक है, आप जैसे आप if I increase, decrease saturation, it will go with that, right? So if I increase hue, right, it will change according to that. ठीक है, so all those things are there. So you all can go through all this by your own after this class. So I'll just paste the link here again. ठीक है, चलो, let us go to the CSS now. ठीक है, so anyone please before अभी तो हमने already CSS discuss किया है, what is inline, what is internal. CSS का full form anyone please write in the chat. And also yesterday we discussed अगर आपका website is your body, what is the CSS? Because HTML is a skeleton we discussed, right? So what is the CSS? Everyone be active. Okay, only Amit is active और कोई active नहीं है. Everyone write the full form of CSS. No one other than Amit. Everyone, कहाँ पे हो सब? Okay. It's cascading style sheets, right? Chalo, let's go here.
So what is the CSS? Actually, CSS is your skin, you can say, like the beauty. It gives the beauty to your website. So what is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets. It is to format and lay out a web page. ठीक है, आप colors डाल सकते हो, fonts डाल सकते हो, you know space डाल सकते हो आप बीच में, है ना, आप alignment change कर सकते हो, you can let your website be different according to different screen sizes. ठीक है, आपका फोन में आपका वेबसाइट अलग दिखता है when you open it in a phone, when you open it in a, let's say, desktop, वो अलग दिखेगा, when you open it in a tablet, your website appears different, right? So different screen sizes के लिए you can make different appearance of the website, right everyone? Okay. Now, we already discussed what were the three types of CSS, like two types को हमने देखा हुआ है. So first is your inline CSS, right? By using style attribute inside HTML element, ठीक है? Internal CSS is आप style का यहाँ पे use करते हो inside the head section. Head section पे आप डालते हो, that is the internal CSS, and then you use a link to to get the a CSS file from an external CSS file, right? Dot CSS करके we save it, right? So what are the extensions? I did not discuss that. So whenever we save an in HTML file, let's say HTML file का name है index, so we save it with HTML extension, right? Similarly, when we are trying to save a CSS file, what will be saving it with? With dot CSS extension. So index.css. Okay. So your external CSS file will be saved with a dot CSS extension. ठीक है, चलो, let's see some examples. Inline CSS का we saw it, right? हमने h1 tag define किया था. Inside the style attribute, we defined something, right? So there was a color in a key value pair, right? So that was your inline CSS. चलो, internal CSS we'll see. Let's go here. ठीक है. So in the internal CSS, हमने h1 को define किया that its color should be blue, right? अब मैं wherever I use the h1 tag, its color will be blue. ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते फॉर स्पेसिफिक h1, राइट? अब जहां पे भी h1 टैग यूज हो रहा होगा, इट्स कलर विल बी ब्लू. इफ आई वांट टू चेंज सम स्पेसिफिक, मेरे को उस h1 टैग में जा करके एक इनलाइन सीएसएस देना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स सी. h1 टैग को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं. ठीक है, सो दिस इज अ हेडिंग. लेट्स से this is heading 2 and let's say this is heading 3. If I run this, you see heading 2 heading 3 सारे के सारे blue color में है. But let's say if I go and इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. ओके, सॉरी, इसके here. ठीक है, एंड मैं इसको फिर इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखूंगा. सो आई विल गिव इट अ स्टाइल. तो हम फिर इंडिविजुअली अपडेट कर पाएंगे उसको. ठीक है, so let us go in the h1 tag here. Let's give it style. ठीक है, let's okay मेरे को sorry, just give me a moment guys, actually I'm getting a call. एक second. Just give me a moment. Yeah, sorry. Let's get here. Okay, let's run this. Sorry, it's a background color. I have to change this to color. Let's give it a color, let's say red. Let's run this. See, now you can specifically change the color style for a specific, let's say, header tag. ठीक है, बाकियों का it won't affect. So only we change in the inline CSS for this h1 tag.
So iska color we could change to red. Rest all will remain unaffected. Everyone is clear with this? Please write in the chat if everyone is clear. In this case आपने क्या किया, when you write it in the header tag as an inline css, and आपने simple एक क्या किया, पूरी tag का ही css जो है for the whole entirety of the website you changed. ठीक है? All right everyone, let me close this. Okay, ठीक है, बाकी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. So yeah, so you define it inside the style, right? Style tag inside the head. ठीक है, कहाँ पे हम डिफाइन करते हैं अपना internal css? Inside the head tag, and that is enclosed inside a style tag, right? चलो ना, ऐसे तो हमने पूरा का पूरा भी टैग का डिफाइन कर दिया, राइट? वी डिफाइन फॉर द होल बॉडी, वी डिफाइन फॉर द h1, वी डिफाइन फॉर द p, बट इट कैन आल्सो बी डिफाइंड यूजिंग क्लासेस एंड आईडीज. ठीक है, दैट विल बी सीइंग नाउ. चलो, लेट अस गो हियर. लेट्स सी इफ इट इज डिस्कस्ड हियर, अदरवाइज वी विल लुक एट इट टू लुक इनटू इट, जो हम कोड करेंगे प्रॉपर्ली. ठीक है, h1p टैग. ठीक है, ओके. All right, let's say look into more examples. Right now we give the border to the paragraph. तो देखो, जब भी जहां जहां पे paragraph है, it is getting a border of 2px. It's solid and the color is powder blue. Now the margin is 5px. What is the margin? So margin is what it, ये आपको margin देता है. So it gives space, right? All sides, right? So right, left, up, down. ठीक है, अगर आपको specifically margin डालना है, so you'll have to define margin right, margin top, right, margin left, like that. Now, what is the difference between margin and padding? Have you heard about margin and padding, everyone? Let's be interactive. Have you heard about margin and padding? If yes, please let me know. And also, please write the difference. That would be appreciated if anyone knows it. सब सो रहे हैं क्या? Okay. No one is interactive. कोई बात नहीं भाई. Here. ठीक है. Let's say give if I run this. See, margin क्या वो करता है कि आपको external, right? It gives spaces externally. Padding is where you get the spaces internally, right? Yeah. Right, Abhilash. Or Abhilasha, sorry. Abhilasha and Amit. ठीक है. We saw this. Let's move on. ठीक है. Now, how do you link your external CSS? ठीक है. So you see, हमने क्या किया? हम link tag का use करते हैं. ठीक है. We give the right the name and then we give the like कहाँ से वो CSS को हम import कर रहे हैं, right? चलो, let's see how links work here. HTML links, right? HTML links are hyperlinks, right? So you can create, you can jump to another document, jump to another uh, link, right? So how do you do that? You write the URL, ahref, and then you write the URL inside the a tag, right? And then you give the link text, right? कि किस link text के ऊपर आपको क्या link डालना है, right? So we already saw that, but still चलो एक बार example once again we'll look into it. ठीक है, w3schools.com. कहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो, राइट? लेट्स से विजिट w3schools.com की जगह लेट्स से just give it w3schools and run it, and then still it will take you to the same website, right? चलो, let's not waste time here. Now there are few attributes that you can be used inside your link tag. So one is the target. ठीक है, target में आप define कर सकते हो itself, blank, parent, top, right? So let's say अगर आप blank define करते हो, then let's last time हमने जब इस पे click किया था, the site opened here itself, right? Let's say if I click this time,
it will redirect me to a new page, right? तो एक नया टैब खुल जाता है उसके वजह से, right? If I go, let's say google.com, I run this, you see the Google web opens, right? I hope this is clear to you all. What is blank used for? Chalo. Let's see what all we can go through. Okay. So जैसे हमने टेक्स्ट पे ना हम कर रहे थे आपका ये एट्रीब्यूट, राइट, ahref, वी कैन ऑल्सो यूज दैट ओवर एन इमेज, ठीक है? हम इमेज से भी हाइपरलिंक बना सकते हैं अपना, राइट? हम इमेज पे भी क्लिक करके वी कैन गो टू अ न्यू वेबसाइट, ठीक है? तो यू ऑल कैन डू दैट, ठीक है? इट्स नथिंग मोर देन आपको एक इमेज टैग को ए टैग को आपको इमेज टैग के अंदर डालना है, एंड देन उसके अंदर आपको उसका इमेज डालना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है? राइट नाउ देयर इज अ मेल टू, ठीक है? जैसे आपने वहां पे यू मेड अ वेबसाइट का लिंक, देन यू क्लिक्ड ऑन दैट, इट ओपन न्यू पेज, राइट? सिमिलरली अगर आप किसी को मेल भेजना है, ठीक है, एंड देन यू वांट the mail to be redirected rather than them copying and pasting it in their email, right? So आप क्या कर सकते हो, you can use the mail to, right, ahref and then mail to, and mail to के बाद you can write whatever the email you want to let your users use, right? जहाँ पे आप वो आपको मेल कर सके, right? Now when I click on this, it'll redirect me to the mail, ठीक? तो मेरे को चूज करना पड़ेगा मैं किस मेल के थ्रू इसको भेजना चाहता हूँ, ठीक है? If I have a single one, it will just redirect me to there. चलो ठीक है, let's open this, so close this, ठीक है? Now there are some events as well. अभी यहाँ पे इन्होंने डिस्कस नहीं किया, but has given here, so let's go for the button right now, ठीक है? So button tag के अंदर you see there is a event, right, on click. So जब मैं click करूँगा something will happen, right? So when we click on this event, a trigger will be there, right? So if document.location is default.asp, let's click on this, you see document gets loaded, right? So इसका आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट? लेट्स से ऑन सबमिट, राइट, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, फॉर्म्स बटन्स आर यूज्ड, ठीक है? आप मल्टीपल पेज का फॉर्म बना रहे हो, ठीक है? यू कैन नॉट गिव एवरीथिंग इन द सेम पेज, सो नेक्स्ट जो आप यूज करते हो दैट इज अ बटन, राइट? एनीथिंग दैट इज यू कैन बेसिकली क्लिक, एंड देन गिव्स यू अ फीडबैक, ठीक है? दैट इज काइंड ऑफ अ बटन, राइट? ठीक है? So buttons are used to execute an action. We can learn through that, right? Now let's see what all things are there. हमने image discuss किया था, but let's see, the whole section is here, right? So let me just run something that is more. ठीक है, let's go and run this. So you can see यहाँ पे हमने src में अपना डाला source of the image, कहाँ पे वो stored है. If it is stored inside the same file, ठीक है, आपको वहाँ पे कुछ भी slash नहीं लगाना पड़ता. You can directly use the name, right? jpg, like completely you have to write the name of that along with the extension. Now alt girl in the jacket, why it is being used? अगर ये image load नहीं होता है for any reason, ठीक है, internet is not working or something, you're offline, right? तो उस case में the girl in a jacket will be visible here, right? Now again width and height we discuss again, right? हम इसको कुछ भी कर सकते हैं. Now if I give it 700px, let's say, so it will stretch, right? If I give a width of, let's say, 900px, you will see a stretched version of this. ठीक है? Doesn't look good, but again this is the work. All right, let's see some other examples. So you see, I told you अगर same folder के अंदर है, you can just write, let's say, html file.gif, but if it is in the another folder, तो आपको उसका path डालना पड़ेगा. So you enter the path inside the src file. All right, everyone. So till now, anyone has any doubts? Acha class I'll be ending a bit sooner, okay? And one more information, that tomorrow's class will be shifted on Monday, okay? So tomorrow's class I'll be taking on Monday.
same timing, it will be 9 to 10:30. All right, everyone. And मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी एक information डाल देना that tomorrow's class will be on Monday, same timing, 9 to 10:30. Okay. Till now, anyone has any doubt? Right, Amit, thank you. Chalo. You can also use animated images, right? GIF is used here, right? You can use videos as well. आप वीडियो अगर यूज करते हो तो उसके अंदर आप कंट्रोल्स भी थोड़े बहुत सेट कर सकते हो, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन. नाउ लेट मी go. What is a fav icon? Anyone? Please let me know. What is a fav icon? What is a fav icon? Please. दो साल हो चुके हैं आपके, है ना? अब तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ फैब आइकन. इंपोर्ट्स तो आप कहीं से भी कर सकते हो अमित, है ना? बट फैब आइकन इट्स काइंड ऑफ लाइक, समझ लो आप, इट्स लाइक जैसे index.html सेट है, वैसे ही वी यूज अ फैब आइकन दैट इज सेट. इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर फेवरेट आइकन, राइट? सो आपकी जो भी ब्रांड आइडेंटिटी होगी, आप उसको सेट करोगे एज योर फैब आइकन. यूजुअली मेन जो इसका यूसेज होता है, ठीक है, दैट इज यूज ऑन द वेबसाइट टाइटल. ठीक है, जब भी मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, सी in the Xcali draw, you see this is the fav icon for Xcali draw. ठीक है, यहाँ पे you can see again fav icon for your W3 schools. ठीक है, so that is the identity or your logo that can be set as fav icon. Usually fav icons का size बहुत small होता है, क्योंकि है ना, वो usually आपके साइट टाइटल्स पे लोड होता है, और somewhere just जैसे आप शेयर करोगे लिंक तो वहां पे भी लोड होता है. So fav icon is used for that. ठीक है, like you can look here in the W3 schools, here the fav icon of W3 schools is visible, right? So you see how it is being done here. Head mein you get a link, right? You write the name, what it is for, right? You write the type, right? और आप वहाँ पे अपना fav icon का डालते हो. So it's usually used by the extension .ico, right? So आप जब भी fav icon करते हो, you mainly use the extension ICO. चलो. So there are so many extension types, ठीक है? Everyone has its own uses. So this is JPG, JPEG, right? PNG, SVG. So everyone is clear with these extensions. ठीक है, एक बार go through कर लेना. Some extension types जब आप build करोगे website और SVGs, ठीक है, जब भी आप कोई let's say आप blobs डालोगे, ठीक है, आप कुछ you will be using something vector icons, right? Usually that will be in an SVG format. SVG format में क्या होता है, the image doesn't break, ठीक है? So it's kind of, so it's a coded image basically, ठीक है? आप कोड करके उसको बनाते हो, right everyone? ठीक है, as I said here, ठीक है, बहुत सारे फाइव आइकन टाइप सपोर्टेड होते हैं. मेनली ICO विल बी यूज, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो यूज PNG, GIF, JPG, SVG, ठीक है, बहुत सारे आप यूज कर सकते हो. Let's go to the tables actually. हम tables अभी देखेंगे and then we'll take the doubts and we'll probably end this, right? तो हमने टेबल्स yesterday हमने देखा था. टेबल्स क्या होता है, हम अपना टेबल डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, रोल नंबर, नेम, रिजल्ट. आप जब अपना रिजल्ट देखते हो टेबल पे आता है, कुछ भी चार्ट्स बनते हैं वो टेबल्स पे आते हैं, राइट? सो टेबल का क्या होगा, टेबल का बॉर्डर होगा, टेबल का रो होगा, टेबल का हेड होगा, राइट? सो एवरीथिंग विल बी डिफाइंड. अभी जैसे यहाँ पे एक टेबल आ रहा है, ठीक है, लेट्स गो हियर एंड विल सी अभी यहाँ पे हर एक चीज क्या क्या डिफाइन हो रहा है. जैसे देखो यहाँ पे टेबल के पूरे टैग को ही यहाँ पे वी डिफाइन सम इंटरनल सीएसएस. ठीक है, क्या दिया हमने उसको, हमने एक फॉन्ट फैमिली डिफाइन किया, दैट विल बी एरियल. एरियल फैमिली के अंदर इट विल बी यूजिंग दिस फॉन्ट सैंस सेरिफ, राइट? ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं. दैट्स अगेन अ स्टाइल फॉर बॉर्डर्स. ठीक है, विथ यहाँ पे दिया गया दैट विल बी यूजिंग 100% ऑफ द विथ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी चेंज इट टू लेट्स से 90%. सी, तो पूरे साइज का हॉरिजॉन्टल जो साइज है उसका 90% विल बी यूजिंग नाउ. ठीक है, उसी तरह से TD एंड TH स्टैंड्स फॉर योर
table data, table heading, right? उसके लिए we defined a border. Let's say we defined the border will be solid, not dashed. हमने color define किया उसको, ठीक है. We gave the alignment. Let's say left alignment है. अगर मैं इसको center करता हूँ, let's say, ठीक है, run this. See, यहाँ पे ये बीच में आ गया है कि नहीं? Now if I go, इसको मैं लेफ्ट ही कर देता हूँ, ठीक है, will be looking better. चलो, now we gave some padding to it, 8px, ठीक है. Let's increase it and we'll see what the effect is. So I give 20px and I run this. You see, table becomes much more cleaner, ज़्यादा spaced out रहता है. It looks, it's more readable, right? बहुत ज़्यादा दोगे तो फिर वो भी खराब है. So let's say if I give it 12px for, चलो, right. Now tr, ठीक है, we are using nh child even. So क्या होगा कि हर even indexes पे the background color will change to this, ठीक है. Just like you can see here, ठीक है, कि यहाँ पे there's this color, then there's this color, then there's this color, right? हर second position पे the color is becoming a bit gray, ठीक है. So for that is your nh child is used for, right everyone? Clear है? आप रेगुलर इंटरवल्स पे, लाइक nth इंटरवल पे आप कुछ स्पेसिफिक स्टाइल आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो. लाइक वी हैव गिवन कि हर एक इवन पोजीशन पे, आफ्टर एवरी वन पोजीशन, यहाँ पे द बैकग्राउंड कलर विल बिकम दिस. चलो, नाउ आई कैन चेंज दिस. लेट्स से आई कैन गिव इट, लेट्स से रेड, ठीक है, एंड आई रन दिस. सी, इट चेंजेस. सो लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस वन. लुक्स बेटर देयर, ठीक है. ना अब हम यहाँ पे आ रहे हैं S2 टेबल, ठीक है. लेट्स से अभी हमने टेबल का टैग डिफाइन किया. टेबल टैग के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले आप यहाँ पे अपना रो डिफाइन कर रहे हो, उस रो के अंदर आपने टेबल का हेडिंग डिफाइन किया, ठीक है. हेडिंग के अंदर क्या क्या आ रहा है आपका? कंपनी, लेट्स से कॉन्टैक्ट एंड द कंट्री, ठीक है. सिमिलरली आपने हेडिंग डिफाइन कर लिया. नाउ देयर विल बी ओनली रोज, राइट? तो आपने आप सॉरी आपको उसका टेबल डेटा आपका आएगा, ठीक है. सो ऑन द सेकंड रो यू डिफाइन द टेबल डेटा. सो दैट विल बी, लेट्स से, अल्फ्रेड एक कंपनी है, उसके जो हमारे कॉन्टैक्ट एड्रेस इज मारिया, ठीक है. शी इज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है. इसी तरह से यू केप्ट ऑन डिफाइनिंग, ठीक है. मैं किसी एक को हटा दूंगा, सो द रो विल डिसअपियर, ठीक है. आई थिंक दिस मच शुड बी क्लियर टू यू गाइस. हम आगे कॉल स्पैन है, रो स्पैन है, वो भी चीजें चेक करेंगे. प्लीज कंफर्म. इतना क्लियर है ना आप लोगों को? दिस इज वेरी बेसिक अबाउट द टेबल. आज आपके मयंक सर नहीं आ पाए, ही वाज सिक. Okay, sorry for the disturbance. चलो, we'll move forward. Let's see अगर कहीं पे styles or something has been given, we'll be using that. Okay, let's use this, what is given in this one. Yeah, so you can see the screen, right? चलो, ठीक है. So here you can see again that हमने यहाँ पे person1, person2, person3 हमने define किया as heading. उस तरह से हमने table data यहाँ पे दिया हुआ है. So email is there, right? And Tobias, Linus, right? तो हमने हर एक चीज उसके बारे में define किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. Let's skip this one. Let's go for the borders, ठीक है. Now we have got different types of borders again, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो the table here. There's this one type of border. There's a collapsed border, ठीक है. Then collapsed border में क्या हो रहा है? So the आपने जो यहाँ पे all these things are there that stands out, it becomes one, right? So border collapse हो जाते हैं पूरे के पूरे. Internal and the outside border, it collapses and merges into single border, ठीक है. Now you can give background to them, right? जैसे यहाँ पे इन्होंने background दे दिया, nothing else, just they have given the background and it has collapsed. A border radius define कर सकते हो, right? So let's use this one for ourselves, ठीक है. So you can define the border radius, ठीक है. Now if I give, let's say, padding as well, let's give a padding of 5px.
ठीक है, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैडिंग मिल जा रही है, राइट। सो आई होप दिस मच शुड बी क्लियर टू यू। अगर हम यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स कर देंगे सो इट विल बिकम कोलैप्सिबल, राइट, एक सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे। ऑलराइट, सो सिमिलरली मैंने बोला था सो दी कैन गिव डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल, सो दैट कैन बी डॉटेड, डैश, अभी तक हम वी वर यूजिंग सॉलिड, राइट। देन देयर कैन बी डबल बॉर्डर, देयर कैन बी ग्रूव बॉर्डर, रिच बॉर्डर, ठीक है, ये सारे के सारे आप ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स से इफ आई ओपन दिस वन, ठीक है, एंड इट इज देयर, यहाँ पे डॉटेड डिफाइंड है। अगर मैं इसको सॉलिड करूंगा, ठीक है, इट विल बिकम सॉलिड, ठीक है। और देखो क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। आउटसेट है, लेट्स गो एंड लेट्स अप्लाई दिस वन, ठीक है। So if I run this one, it will be visible like this. Let's say, uh, if I sorry, I guess यहाँ पे नहीं करता ना, ठीक है। So it will be visible like this, ठीक है। अब अगर हम हिडन करेंगे तो border will be hidden. So let's say let's write hidden here. Let's run this. So the border goes away, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे इनके एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर कलर इज एन ऑप्शन, ठीक है, तो आप बॉर्डर कलर भी डिफाइन कर सकते हो, वी ऑलरेडी सॉ दैट, ठीक है। टेबल के आप साइजेस डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो आप हर एक इवनली नहीं होगा, लेट्स से हर एक विथ के हिसाब से अपने कंटेंट के हिसाब से नहीं लेगा, बट यू कैन ऑल्सो डिफाइन ईच रो का भी विथ यू कैन डिफाइन, राइट। सो ऑल दैट कैन बी डिफाइंड यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट, राइट। हमने विथ ऑलरेडी अभी चेक किया हुआ था, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखो हमने पूरे टेबल को 70% विथ डिफाइन किया है, सो लेट्स जस्ट रन दिस एंड देन आई लेट यू नो। सो हमने पूरे विथ को टेबल के विथ को 100% डिफाइन किया हुआ है, but the first row जो है, the first one, that one we are defining by 70%. If I reduce this, the first one will be reduced, right, you can see here, and the rest वो अपने हिसाब से अपने sizes को ले लेंगे। All right, let's reduce this by 90%, let's say, see, तो 90% के हिसाब से it will take the 50%, it will not take 50% of whole 100%, but it will take 50% of the remaining 90%. I hope this much is clear, everyone. All right, now let's go for table headers, ठीक है। अभी हमने देखा हाउ वी कैन डिफाइन द हेडर्स, राइट, वो तो ऑलरेडी वी हैव सीन दैट, राइट। दे आर वर्टिकल टेबल हेडर्स एज वेल, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप यूजुअली क्या कर रहे थे पहले, यू वर यूजिंग टी एच। नाउ इंस्टेड ऑफ दैट इन्होंने क्या किया कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट दे हैव रिटन एज टीएच, ठीक है, एंड द रेस्ट दे हैव डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दैट। सो बेसिकली रोज एंड कॉलम्स हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, है ना। सो बॉर्डर कोलैप्स, इफ आई रिमूव दिस, क्या होगा यहाँ पे, लेट्स सी, ठीक है। वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। नाउ दैट अलाइनमेंट हमने भी ऑलरेडी देखा हुआ है कि हम सेंटर अलाइन कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, हमने ये सारी चीजें चेक की हुई है, ठीक है ना। मल्टीपल कॉलम्स के लिए हेडर्स है, चलो। सो वी टॉक्ड अबाउट कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, मैंने पहले बताया था, ये टर्म आपको इंट्रोड्यूस किया था। कॉल स्पैन इज बेसिकली आप कॉलम को स्पैन कर रहे हो, रो स्पैन इज बेसिकली आप रो को स्पैन कर रहे हो, ठीक है, आप बढ़ा रहे हो ना। अब क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो सकता है, राइट। सो जिल स्मिथ इज द फर्स्ट नेम लास्ट नेम बेसिस, ठीक है। तो आप नेम को अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हो, राइट। सो मैंने क्या किया कि हमने क्या किया कि पहले हेडर को ही कॉल स्पैन 2 दे दिया, ठीक है। इफ आई रिमूव दिस, लेट्स से, ठीक है, सॉरी, इफ आई रिमूव दिस एंड आई गिव द कॉल स्पैन ऑफ 3, ये कंप्लीटली उसको कर लेगा, है ना। सो कंप्लीट नेम पूरी तरीके से यहाँ पे आ चुका है, राइट। सो लेट्स गेट बैक, राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं रो स्पैन यूज करता, ठीक है, सो हाउ कुड वी डू दैट, विल ऑल्सो लुक दैट, देखता हूँ एग्जाम्पल से, लेट्स नॉट मेक बाय वन सेल्फ, ठीक है। लेट्स गो फॉर सम रो स्पैन, होल स्पैन एंड रो स्पैन, ठीक है।
Call span we already saw. Let's see the example of a row span. Now I already talked that row span क्या करेगा, आपको rows को span कर देगा, ठीक है. So these are the rows जो ऐसे जाते हैं. Column span is your vertical ones, horizontal ones are your rows, column is your vertical ones. तो अभी क्या किया हमने, जब row span use किया हमने rows को मिला दिया, two rows, right? So the two horizontal rows were merged into one. ठीक है. So let's say Jill can have two numbers, so हमने उसको merge कर दिया. How do you do that? Using the row span keyword, right? So when you use the row span, आप यहाँ पे second वाले पे दो रो नहीं define कर सकते हो, ठीक है. If you're going to define it, it will look something like this, ठीक है. एक नए उसमें completely ये चला जाएगा and won't look very good. So you should know how to use the grid patterns, ठीक है. So what are columns? Basically they are grids. आप grids को rows and columns, headings उससे बनाते हो, ठीक है. And then you can use rows and row span and col span to use it according to your own will. Chalo. So we use these two. I hope the row span and col span is clear to you guys. The last thing also we'll see lists. ठीक है. कल हमने already इसके बारे में देखा हुआ था, but we'll see today with examples. ठीक है. कुछ भी नहीं है. There are two kinds of lists: ordered list, unordered list. List define करने के लिए होता है, simple as that. ठीक है. आप जब unordered list यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो डॉटेड आ रहे हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, स्टाइल एलिमेंट में जा करके, ठीक है, कैसे आपको वो यूज करना है, ठीक है. एंड सिमिलरली इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट ये ऑर्डर में आएंगे, सो 1 2 3 ए बी सी डी, ठीक है. सो ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन करने के लिए यूज द टैग यूएल, ऑर्डर्ड यूज के लिए वी यूज द टैग ओएल, ठीक है. एंड दोनों के ही अंदर में आप एल यूज करते हो टू डिफाइन सिंगल लिस्ट. हर एक सिंगल लिस्ट को आप एल टैग के अंदर डिफाइन करते हो. इज इट क्लियर टू यू गाइज एवरीवन? नाउ देयर आर आल्सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है. जैसे आप मेन्यू कार्ड में जाते हो तो मेन्यू कार्ड में आपका कॉफी लिखा रहता है, कैपुचिनो लिखा रहता है, एंड उसके नीचे द इंग्रेडिएंट्स आर रिटन, कैलोरीज आर रिटन, समथिंग लाइक दैट, राइट. तो वैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, वी सी दिस कॉफी, द कॉफी इज ब्लैक हॉट, यू नो, वी कैन यूज कोल्ड कॉफी, ठीक है, ऐसे करके. मिल्क है, देन देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू इट. हाउ डू यू डू दैट? डीएल. तो डीएल इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पे डीटी एंड डीडी, सो बेसिकली द, यू नो, उसका नेम एंड द डिस्क्रिप्शन का जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, राइट, द डेटा का डिस्क्रिप्शन, राइट. सो यू कैन यूज दैट. वेरी सिंपल, ठीक है. बस नेम से ही सब चीजें क्लियर हो जाती है मेनली. सो अगेन यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स हियर, ठीक है. योर डिस्क्रिप्शन का dt is, you know, the term for description list, describes the term in the description list. dd li list, ठीक है. ol and ul we already saw that, right. Next let's go to the unordered list. चलो, कॉफी, टी, मिल्क हमने देखा हुआ था. अब हम वैल्यू दे सकते हैं डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, नन, ठीक है. बाय डिफॉल्ट एक सर्कल, सॉरी, डिस्क रहता है, ठीक है. लेट्स गो हियर एंड लेट्स सी. अगर हम सर्कल करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है. सो बेसिकली जो इट चेंजेस, बेसिकली जस्ट सिंपल चेंजेस, ठीक है ना, ज्यादा नहीं आना, ठीक है. सो वी हैव स्क्वायर, वी गिव नन. नाउ लेट्स गो टू दी ऑर्डर्ड लिस्ट. हम ऑर्डर्ड लिस्ट में आएंगे. सो इसी तरीके से वी कैन गिव टाइप 1, सो 1 2 3 4 ए बी, तो सारे सारे अपर केस में ए बी सी डी आएंगे, ठीक है. अब सिमिलरली, यू नो, अपर केस रोमन नंबर्स, लोअर केस रोमन नंबर्स, सो डिफाइंड बाय टाइप, ठीक है. हम टाइप यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं, तो ये आ रहा है. अगर मैं इसको स्मॉल ए कर दूंगा तो ए बी सी आएगा, ठीक है. इफ आई डिफाइन इट आई, ठीक है, तो 1 छोट स्मॉल रोमन नंबर्स में आएंगे, है ना. सो आई होप दिस मच शुड बी क्लियर टू यू ऑल गाइस. ठीक है. सो आई प्रॉब्ली, यू नो, एंड द क्लास टुडे अ बिट अर्ली, ठीक है. कल को हम कवर अप कर लेंगे जो भी हमारा छूटा है. सो फॉर टुमारोज क्लास वील बी लुकिंग एट एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है. हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे कल को, एंड देन, यू नो, प्रॉब्ली हो सके तो हम कल को, यू नो, जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. वो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपना सीएसएस के ऊपर अब. ऑलराइट एवरीवन, सो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू करो,
थ्रू दी W3 schools का CSS, ठीक है. सिंपल है, टैग्स हैं, टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, यू हैव टू मेमोराइज देम, ठीक है. कुछ कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी होंगी, ठीक है. जस्ट यूज देम, गो थ्रू दैट, ठीक है. यूजुअली तो जब आप व्हेन यू विल गो इनटू कॉर्पोरेट यू विल बी यूजिंग डॉक्स फॉर दैट, ठीक है. आप डॉक्स देख के कर रहे होगे, बट इनिशियली यू नीड टू मेमोराइज फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट CSS का attributes, ठीक है. Any doubts you can ask, or I will probably end the session. Thanks, Amit. Thanks for joining, everyone. I'll stop the recording for now.